Good evening, everyone. Welcome to BYJU'S Exam Prep. My name is Alpa Ma'am, and I hope I'm clearly audible and visible to everyone watching me live. It's very good to see all of you back, and we have yet another session of the RC Master series that's going on our YouTube channel. We're going to be discussing one very tricky and important topic today. That's going to be philosophy. But before that, I'd like to know if you can hear and see me very clearly, everyone. एक बार जल्दी जल्दी से बता दो सब ऑडिबल है विजिबल है फिर स्टार्ट करेंगे फिलोसफी की बात करना क्यों कर रहे हैं ये सीरीज क्या है एजेंडा सीरीज का I'll tell you that as well. So the agenda is that we have been having classes under the series RC Master series where we try to touch upon, let me show you that slide. क्या है agenda? ये रहा. So through the RC Master series, we try to touch upon commonly asked, just a minute. Yeah. We try to touch upon commonly asked topics where passages can come up in the examination. These topics, something that we've already done, some topics we've already had 4 classes. Today is the 5th class. So we have touched upon internet phishing and digital currency and climate change, global warming. These are certain topics on which passages come very frequently. We have yet another topic that we're going to be discussing today, which is philosophy. So the idea is to be comfortable with these topics that are asked commonly, and I try to bring you an extract. We solve the extract. We solve an RC on one of those very commonly asked topics. Passage. Okay. Thank you, Aaron, for confirming that I'm audible in this. Good afternoon or evening. Okay, so we try to solve an RC on that topic. We'll be solving one RC on philosophy today. उसको पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे. उस पे कुछ क्वेश्चंस है उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे. बट देखो फिलोसफी है, पैसेज सर्टेनली इजी नहीं होने वाला है. ओके, सो विल हैव एन अप्रोच टू अगर ऐसे डिफिकल्ट पैसेजेस आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए उसका अप्रोच सीखेंगे. ये है एजेंडा आरसी मास्टर सीरीज का और आज का टॉपिक हमारे पास है फिलोसफी. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग टुडे. तो जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले एक चीज, we have our scholarship test happening on 5th of February 11 a.m. So if you are somebody who wishes to enroll yourself for our programs, this is the best time. Take the scholarship test. You can win up to 90% scholarship. Approximately a crore word scholarships are going to be given out. Take the test. But before taking the test, you need to register yourself. Register karo, test do. You can win a lot of scholarship here. And we have our CLAT 2024 comprehensive course that we've launched. The details of the program are there under my video in the description box. You can call our counselors on this number to know more about the program in detail. Start. पैसेज दिखाने से पहले मुझे बताओ, what do you think is philosophy? Before I show you the passage, पैसेज किसकी बात कर रहा है वो सब डिस्कस करने से पहले मुझे बताओ फिलोसफी होता क्या है. पहले ये बताइए, फिर आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करते हैं सो दैट आपके लिए पैसेज समझना थोड़ा सा इजी हो जाए. क्या होता है फिलोसफी? I'll wait for your answers. What do you think is philosophy? Philosophy किस चीज की बात करेगा? अगर philosophy based passage है, what will it talk about? I'm waiting. Anyone? What is philosophy? किसकी बात करता है? चलो मैं समझाती हूँ आप लोग. Philosophy, okay. Philosophy, अगर आप वर्ड को ब्रेक करोगे, Phil means love. Sophie means logic. Philosophy is love for logic. Is it logical reasoning? नहीं भाई, हम जब philosophical articles पढ़ते हैं तो वहाँ logic कुछ है ही नहीं. In layman terms, जब आप when you try to put logic to everything, when you try to question everything, why,
how. It could be about life. तो ये why how हम साइंस में पूछते हैं, अगर वही आप लाइफ से पूछेंगे, आप अपने एग्जिस्टेंस के बारे में पूछेंगे, that is going to be philosophy. Asking, trying to find logic to life, existence, matter, life after death, all of these questions, they are philosophical ones. Okay? Yes, absolutely. So, study or belief of ideas, beliefs and ideas, yes, that can also be described, should be, as what philosophy is. So, I hope you understand what is the definition of philosophy. I have yet another philosophical article for you. I have 3 pages of that article. Okay, I'm going to show you the first page. After you read the first page, send me a done in the chat box. After you send me a done, I'll be moving on to the second page and similarly the third page. And after we read the 3 pages, we have questions. The passage is certainly tricky. कैसे अप्रोच करना है पैसेज को, पैसेज पढ़ने के बाद बताऊंगी मैं आपको. अभी अपने आप ट्राई करो. पेज नंबर 1, read the page in a lot of detail and then send me done after you done reading this. All the best. Okay, Aaron, I'm going to give you 1 more minute. Others, quickly read the page and send me a done. Done. Changing the slide, everyone. Let's go to slide number 2.
Krishna is done. Shilpi, Arjun. Page number 3. And the last page. Done? Okay, ठीक है. I'm sure, if not completely, you've understood some bits and pieces of the passage, which is the philosophical one. It certainly talks about philosophy, but what else does it talk about? My first question that I'm going to be giving to you is going to be, what could be the appropriate title of the passage? When I say title of the passage, it is nothing else but asking you the main idea, but in a shorter, a crisper form. तो जब आपके पास टाइटल क्वेश्चन होता है, टाइटल क्वेश्चन इज मोर और लेस आस्किंग यू मेन आइडिया क्या है पैसेज, किस चीज की बात कर रहा है, जिस्ट क्या है पैसेज का, एक छोटे फॉर्म में. यही टाइटल क्वेश्चन होता है. टाइटल क्वेश्चन आंसर करो, फिर पैसेज की डिटेल्स डिस्कस करेंगे कि इस पैसेज को कैसे पढ़ना चाहिए था. ठीक है, क्योंकि अगर पहले एक्सप्लेन कर दूंगी पैसेज, आपका ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा. अभी इस क्वेश्चन को आंसर करो. व्हाट डू यू थिंक कैन बी सुटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज? Journalism and philosophy, COVID and philosophy, students of philosophy, W's and H's of philosophy जो first page में discuss था. How, who, where. Okay. Krishna says C. Students of philosophy. Okay, Aryan. Others. देखो यहाँ ना दो ऑप्शंस बहुत क्लोज है, कोविड एंड फिलोसफी एंड स्टूडेंट्स ऑफ फिलोसफी. अब इसका करेक्ट आंसर निकालने के लिए लेट्स गो बैक टू द पैसेज. ठीक है, पैसेज को एक बार फिर से समझते हैं. पैसेज है कहाँ से? इट्स फ्रॉम द हिंदू. हिंदू में एक फिलोसफिकल आर्टिकल आया था, टाइटल था द चेंज इन टाइम्स. ये ओरिजिनल टाइटल था, बट ऑफ कोर्स यहाँ वो टाइटल नहीं सूटेबल हो सकता क्योंकि हमें इतना जेनेरिक टाइटल नहीं चाहिए होता. जब आपके पास टाइटल क्वेश्चन होता है, इट हैज टू बी बैंग ऑन टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली व्हाट द पैसेज इज रेफरिंग टू. जहां अगर मैंने आपको इस पैसेज में एक ऑप्शन दे दिया, चेंजिंग टाइम्स, जो कि
एक्चुअली पैसेज का टाइटल था as a CLAT student, will you choose E as your correct answer? Should you be choosing E? I would like to know your answer here. As a CLAT student, as a competitive examination student, should you be choosing E as the title of the passage, that means changing times? No, never. It should be the first option you should eliminate. Why? Because this option is too generic. आपके लिए टाइटल मेन आइडिया ही होगा. आपको कैसे पता चलेगा चेंजिंग टाइम टाइटल से कि पैसेज किस चीज की बात कर रहा है? चेंजिंग टाइम तो एक नंबर ऑफ चीजों के लिए हो सकता है. चेंजिंग टाइम फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स, एजुकेशन, कोविड, बजट, किसी भी चीज पे हो सकता है, राइट? सो इट्स टू जेनरिक एज एन ऑप्शन, यू विल एलिमिनेट दैट. ठीक है, अब आते हैं इसका करेक्ट आंसर हम कैसे निकालते हैं. ठीक है, सो पैसेज स्टार्ट्स विद ट्रेजेडीज लाइक कोविड. ओके, और कैसे कोविड ने बहुत सारे क्वेश्चंस पे अटेंशन दिया लोगों ने, कैसे एस्पेक्ट्स अलग अलग निकल गया. उसको समझाने के लिए ऑथर ने बोला है कि आप सबसे पहले जर्नलिज्म का फील्ड समझो, कैसे क्वेश्चंस आए. ठीक है, स्पेसिफिकली फिलोसफिकल क्वेश्चंस आए. तो फिलोसफिकल क्वेश्चन समझाने के लिए ऑथर ने बोला पहले आप जर्नलिज्म के क्वेश्चन समझो. An analogy from the field of journalism would be appropriate to understand those philosophical questions. So the author talks about the W's and the H's. जब एक जर्नलिस्ट काम करता है तो वो इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करता है. उसी तरीके से एक फिलोसफिकल स्टूडेंट इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करता है. ठीक है, हाउ, हु, व्हेन, इन क्वेश्चंस को आंसर करने की. So it's like working like a journalist does. There are similar questions that are going to be put up. Okay, so is the whole passage talking about the W's and the H's? It's only one line. It's not my entire passage. Since my entire passage isn't talking about that, that can't be my main idea. I have to eliminate that. So जो option था the W's and H's of philosophy, incorrect. वो सिर्फ ये एक लाइन में मेंशन है, दो लाइन में मेंशन है, कहानी वहां खत्म हो जाती है. आगे चलते, आगे कहानी कैसे बढ़ती है. फिर आता है वो टीचिंग फिलोसफी पे. ऑथर अगेन सेज कैसे हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं स्टूडेंट्स के साथ जब हम उनको फिलोसफी पढ़ाते हैं. और डिटेल में जाता है ऑथर अबाउट स्टडिंग फिलोसफी. ठीक है, कैसे उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है अपने आप को इम्प्रूव करने की अगेंस्ट स्टूडेंट्स ऑफ फिलोसफी. देन ही कम्स बैक टू कोविड अगेन. बट what I know is the author certainly is talking about philosophy and talking about COVID and education. I have to choose one out of the two that would make my answer correct. Philosophy और COVID discussed है passage में, philosophy या education. Education की बात इसलिए करी है क्योंकि COVID आया है, या COVID की बात इसलिए करी है क्योंकि वो education पे impact समझाना चाहते हैं. If you answer this question, you would know your main idea of the passage. I would repeat that. फिलोसफी की बात के साथ साथ ऑथर ने कोविड की बात इसलिए करी है क्योंकि वो एजुकेशन की चेंज को समझाना चाहते हैं, या फिर एजुकेशन की बात कोविड पे स्ट्रेस डालने के लिए लिखी है. If you answer this question, you would know what is more important than the other. कोविड और एजुकेशन में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए. यहाँ Now, do you want to change your answer, anyone? आपके लिए पैसेज में ज्यादा इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज कोविड है या स्टडी ऑफ फिलोसफी, स्टूडेंट्स ऑफ फिलोसफी? What do you think should be the answer, B or C? You can stick to your answer, you can change your answer, but बहुत सोच समझ के आंसर करना. अपना आंसर सेम रख सकते हो अगर आपको लगता है सही. बी, कृष्णा आप बेटा मेरे ट्रैप में फंस रहे हो. आपका आंसर इनिशियली बिल्कुल सही था. इट इज स्टूडेंट्स इन फिलोसफी. कोविड इज नॉट द मेन मेजर आइडिया. It's talking about the impact on studies. Okay, the main idea is education, students and study of philosophy. COVID में कैसे वो चेंज हुआ, COVID उसका एक बाई प्रोडक्ट. Aryan, you're absolutely right. It should still be C. कृष्णा आया समझ में C क्यों होगा अभी भी आंसर और B क्यों नहीं होगा?
Okay, because the author is mentioning about COVID only to stress on the fact कि कैसे education change हुआ है, तो मेन आइडिया आपका education हो जाता है, students हो जाता है, ठीक है? So for me, that's going to be the correct answer. Students of philosophy study education, anything related to that. Question number 2. Word sublime passage में used है, आपको उसका synonym बताना है. I'll take you back to the passage. We'll reread the word sublime in the contextual usage again from the sentence. और फिर हम ऑप्शन में आएंगे आंसर ढूंढेंगे, ठीक है? ऑप्शन है unparalleled, soft, bitter, novice. देखते हैं एक बार sublime कहाँ used है. Here it is. Read the line carefully. Rather एक दो लाइन ऊपर से पढ़ना स्टार्ट. ठीक है? Let's move on. So it says the age-old philosophical system also looks for answers to the same questions, albeit at a more sublime level. जर्नलिज्म से कंपेयर है, लेकिन फिलोसफी का थोड़ा सा और ज्यादा सब्लाइम लेवल पर. क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए? Unparalleled, soft, bitter, novice. What do you think is the correct answer? Sublime? Is it unparalleled, soft, bitter, novice? डी नोविस नहीं, यहाँ फिलोसफी पे अटेंशन दिया है, उसको जर्नलिज्म से कंपेयर किया है कृष्णा, लेकिन जर्नलिज्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है, एक स्पिरिचुअल लेवल पे माना है. Sublime is an unparalleled spiritual world. The correct answer is A. ठीक है? Sublime is beyond those realistic, materialistic world. That's unparalleled. The correct answer is going to be A. Okay, so my 2 cents before I move ahead and give a closure to this passage. If you have philosophical passages, there are a few words that you need to understand the meanings for. आपने देखा ये वाले words, ये line पढ़ने में क्या आपको problem हुई थी? I'll highlight the line. Give me a second. Did you face problems studying these lines, understanding these lines? All of these are terms that are very frequently used in philosophy. Okay? जब आपके पास philosophical passage आता है, आपके लिए ये words की knowledge होना बहुत जरूरी है. मैं एक layman language में words के मतलब आपको समझा देती हूँ. So that next time you come across these terms, आप डरो नहीं, ठीक है? इन words को हम ये यादस्टिक होते हैं, जो theories बनाते हैं philosophical theories. तो existentialism, ठीक है? बेसिकली ये सारी आइडियोलॉजी है. इनको ब्रेक करोगे तो तब मीनिंग समझ में आएगा. एक आइडियोलॉजी जो एग्जिस्टेंस पे फोकस,
एक आइडियोलॉजी जो यूटिलिटी पे फोकस करती है, मतलब आपके पास एक चीज है उसकी कितनी यूटिलिटी। एक यूटिलिटेरियन ऐसा पर्सन होता है जो हर चीज की यूटिलिटी के हिसाब से उसको जज करता है। ए बी सी तीन पेन में से वो पेन खरीदूंगा जिसकी सबसे ज्यादा यूटिलिटी हो। ठीक है। एग्जिस्टेंशियलिज्म जो आपकी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करता है। यूटिलिटेरियनिज्म जो आपकी यूटिलिटी पे क्वेश्चन करता है। प्रेगमैटिज्म जो किसी भी चीज की प्रैक्टिकलिटी पे फोकस करता है। ठीक है, तो कोई भी चीज प्रैक्टिकल है कि नहीं है, pragmatism. Pragmatic is practical. Socialism, of course, society and its behavior. Humanism, human and their behavior, and so on. So ये कुछ ऐसे areas हैं specifically जो sociology और psychology के mixture में आती हैं, जो आपकी philosophical theories की building में help करते हैं. ठीक है? तो next time come across these words, do not be powerful. These are very simple terms. इनको break करोगे इनका meaning. That's going to be all today, everyone, for your philosophy class. Make sure you do not leave the class without hitting the like button. Okay? Like and subscribe for the channel. You can also follow us on Instagram, Facebook. You can follow our Telegram channel. The links are there under my video in the description box. You can also download our app and Google Play. That's going to be all for today, everyone. Do not leave the video without like and share with your friends. Have a very good evening, everyone. God bless.